Victor Tango, Kilo Alpha Lima, Mumbai Control, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1. How do you read? Read you 5, strength 5, Victor Tango, Kilo Alpha Lima. Okay. Are you ready? Yes. So I'm sharing the paper on screen. The moment you see the paper on screen, you we can start directly. Simple. Yes, sir. So remember your training, enjoy the session, don't worry about anything, focus on quality and be in the moment and have situational awareness. All right. You have charts with you? Affirm. Victor Tango, Kilo Alpha Lima. Do you see the paper? Affirm. Hmm. You can start transmitting. Question number 1. Alpha. Delhi ground. Air India 90852. Stand 2. 121.9. IFR Delhi to Chennai. Flight level 310. Passengers on board 110. Airbus 320 heavy.
Security check complete. Information Charlie. Request startup on priority. Due human organ transplant on board. For flight level 310. Air India 90852, Delhi ground. Startup not approved. Due flight level 310, unavailable. Report intention. Startup not available. Due flight level correction. Startup not approved. Due flight level 310 unavailable. Request startup on priority for flight level 290. Victor Tango Kilo Alpha Lima. Air India 90852, Delhi ground. Flight level 290 approved till Kalna. Thereafter can take flight level 310 with clearance. Startup approved. Kindly expedite. Flight level 290 approved till Karna. Thereafter, flight level 310 with clearance approved. Startup approved. Expediting for flight level 290 with Air India 90852. Go to next question. Delhi ground. Confirm question number, please. Question number 1, Bravo. Delhi ground. Air India 90852. Stand 2. Request taxi instructions. IFR Delhi to Chennai. Air India 90852, Delhi ground. Cleared to taxi to runway 28 via
Taxiway Lima 1 on left. Turn right for Sierra 2. Approaching taxiway intersection. Hold position. Report reaching. Cleared to taxi to runway 28 via taxiway Lima 1 on left. Turn right for Sierra 2. Approaching taxiway intersection. Will hold position. Will go Air India 90852. Go to next question. Delhi control. Please confirm question number. Question number 2. Delhi control. Air India 90852. Zero 350. Radial 1903. 25 DME. Inbound Kalna. Whiskey 20 South. Flight level 290. Estimating Ibani 0420. Bravo Papa Lima 0440. Hotel India Alpha 0540. ETA Chennai 0620. Request climb clearance to flight level 310 after passing Kalna. Airbus 320. Passengers on board 120. Go to next question.
Question number 3. Pan pan, pan pan, pan pan. Sorry, 3 has 2 parts. Question number 3, alpha. Pan pan, pan pan, pan pan. All aircraft in the vicinity of Busbo, Air India 90852. Received bad weather warning over Hotel India Alpha. Will deviate on own. Deviating left of track by 15 nautical miles at 10 nautical miles will climb 300 feet, will stay parallel on deviated track. All exterior lights on. Keep a lookout. Aircraft Airbus 320. Passengers on board 120. Go to the next question. Question number 3, Bravo. Hyderabad control. Air India 90852. Zero 520 at 0500 had deviated left of track. Whiskey 20 by 15 nautical miles. Flight level 2, correction. Flight level 313. Clear, correction. Due bad weather. Clear weather ahead. Would like to rejoin Whiskey 20 at Godel. Request descent to flight level 3
1 0, and to rejoin Whiskey 2 0. IFR Delhi to Chennai. Go to next question. Question number 4. Pan pan, pan pan, pan pan. Chennai Tower. Landed runway 09. Experienced disregard. Pan pan, pan pan, pan pan. Chennai Tower. Air India 90852. Landed runway 09. No. Experienced loud noise below cabin. Holding position after coming to stop. Request further instructions. Go to next question. Question number 5. 1. Aeronautical information service. Center Next. line. Wait. You cannot jump to the next question. It's clearly written in the instructions. Start over. Question number 5. Question number 5. 1. Aeronautical information service. Next. Center line. Next. Alert phase. Next. Inbound. Next. Upper control area. Okay. Please submit your log. Okay, Answer. Khalil. So how do you feel? I'm sorry. Can I see you? Yep. Oof. I look so wasted today. I don't know why. Wait, just stand by. Okay.
Yeah, Khalil. So how was the experience? It was good, sir. Made some mistakes, but overall happy about it. Made some mistakes, मतलब why? एग्जाम में मिस्टेक करने जाते हैं क्या? Try not to make many mistakes. Why? I mean, what makes some mistakes, मतलब? Feel like I was running out of time a bit. Mm-hmm. Tell me experience with the paper, understanding of the flight plan, questions, replies. Tell me Question how was paper, the experience? question paper was relatively simple. Mm-hmm. Just given the fact that startup was not approved for the given altitude, cruising level, Mm-hmm. and new flight level is given, and after further clearance from authority after a point. So that was a different case. Uh-huh. Apart from that, everything was straightforward. Mm-hmm. Weather deviation, RCF. Yeah, it was very nice. I can see a lot of improvement. That is good. And that's nice. A little bit of observations which I would want you to listen and work on starting now, or maybe once you sit to study again. These observations and the feedback is very important for you to follow. It will minimize whatever errors we have seen or what we think are over here. Uh, First thing I've noticed that there's no proper, I mean, okay, we'll start with question number one, Alpha. I don't know why you were not remembering to say the question number, even the examiner was telling you to give the question number. So always listen to the examiner and understand what they are saying, not just with replies, but with instructions also. It's a teamwork in the exam. If they are helping you, take the help. If they say something once, you follow that instruction till your 25 minutes are over. Okay. So that was something that you were missing. Understand, you need to have some connect with your examiner, and it will only help you. ATC and pilots go hand in hand. In order for ATC to do their job, pilot has to listen to them. In order for pilot to do their job, ATC has to listen to them. You have to understand this is as real as it gets, even in the examination. Okay. So be careful. Be careful. It's important you say the question number so that you don't miss any question number. Or it's important if the examiner is telling you to say it. Simple. So you just make a habit. Question one, alpha. Question one, bravo. Why is it so difficult? It's not difficult. It was a good call. I just wanted to see a log here once. Now, if you focus on the feedback, then you will not have any problems going ahead. So I want you to please focus on the feedback. Uh, Information, right? Only small. Use abbreviations where you can. I can still see an influence of non-RT words. I still see a lack of RT words. Tell your mind, I have to use RT words and phrases. Other than that, I cannot use anything else. Simple. It's that simple. Security check complete. Security you can write in short. Just go check abbreviation, see if anything can be replaced. So your call length could be reduced. Unavailable, I want you to check what is the abbreviation. Report, intention, check abbreviations, replace these words with abbreviations. It's so simple. It will only make your call short. Startup not approved. Now, what is NA? I'm not sure if it is an abbreviation in 8400. You cannot make your own abbreviations in RT. So you've written NA. You cannot write NA. Okay, your logs are very important. So I want you to cross-check these logs. I want you to cross-check, what do we say, these abbreviations today and send me a list of all these abbreviations. Correct? Checked. Check from 8400. Not what you think, not online. Check from 8400. That's it. Just do a PDF search. That's it. Easy, right? 5 minute, Yeah. 10-minute exercise. Handwritten list of whatever I'm marking today right now.
Anything else that you see that we have used in the call, you can add that also. Like approved, I want you to do it. Okay. Yeah. Mm, otherwise, the logs are fine. Mm, Yes. I liked your thinking with respect to how you handled the situation. Uh, I didn't like how you're constructing things. It just sounds a little odd. Like here, if you see, uh, report intention. So you can say we'll take flight level 290 Victor Tango Kilo Alpha Lima. That's it. Request startup on priority for flight level. No, you are still doing something that probably make someone understand that you're mugged up something. Be very fluidic with your examiner. What did he say? Report intention. Startup not approved. Due unavailable. You will give me a readback first. So your readback, startup not approved, due flight level 30 unavailable. Why did you write it two times there? I don't know. Don't write it two times. Cut out the first line. Startup not approved, due flight level. Request, you can use abbreviation. Check if there is. Check startup abbreviation once again. Request Yeah. startup for flight level. You can simply say, will take flight level 290 in this case. Because I know in certain cases we can say give starter for another flight level, which is from a question where in the question it's mentioned that instead of assigned flight level, we think winds are favorable on some other flight level. There we can simply say request startup on priority. There we say an updated flight level altogether. We cannot just use what we have learned in one situation everywhere. Every situation we have to understand different, be in the zone with the examiner and say, okay, report intention, intend to take flight level 290. So we don't have to say intend to take flight level. They said, we'll say, we'll Yeah. take flight level 290, say affirm flight level 290, Victor Tango Kilo Alpha Lima. Simple. Don't use math, no, nothing, no, sorry, math, prepositions, conjunctions, etc., etc. We don't need that. Simple. It just sounds a little odd. It sounds a little less prepared, underprepared, half prepared. Why do we need to give that impression to our examiners? Simple. So, flight level 29 is approved till Kalna. I liked your read back. Here again, structuring was a little mismatched. Thereafter, flight level 310 with clearance approved. No. Thereafter, flight level 310 will request or just simply leave it there, Mm. or Yeah. thereafter flight level 30 subject to clearance you could say, or you'll say with clearance. You don't have to say this here. It was very strange. Clearance approved doesn't go hand in hand. Startup approved. Expediting for flight level. No. Kindly expediting. Yes, expediting Okay. startup. You're not expediting directly for flight level 2990. For, we don't need for. Wherever I have seen for being used in our calls, it doesn't make sense. Like transmitting for question one, we change. No, no, for. Leaving this for that flight level. Leaving that flight level for this flight level. Only that's one place where we can say for. So there are two things. You need to just refine the two observations here. Three observations, I'll tell you. One is minimize non-RT things. Two, don't give dead air. There was a lot of dead air going ahead. I think you're just jumping onto the answer and then thinking of what the answer would be. That is giving you dead air. You have a strategy. Don't jump onto the answer unless you've framed a call in mind. Once you've framed a call in mind, half of the mistakes would be rectified and you'll have fluency. Now, whenever you raise the station and said your call sign, there has been a gap, and I have wondered whether you've raised the station or you're taking a call. I'm like, why is he raising a station? And by the time I'm thinking whether I should say go ahead or just give the two W's, then you're continuing with the call. If you're making someone think so much, it means there has dead air. There is dead air, which is not required in RT. So a 5 to 10 second gap will create dead air for us. We don't need that. So you need continuity, and continuity comes when you frame your call first in mind and then speak. Or with practice, it can come in live call also. So these are the only three feedback that we have. Otherwise, everything was good. But So these things could yeah. mask your under preparation in your own mind and will leave you away from your time where you could prepare more in this direction. So you need to firstly acknowledge
इफ यू कैन एक्नॉलेज देन ओनली यूल रियलाइज दैट ओके सर बोल रहे हैं मतलब इनसे मेरे मार्क्स कम हो सकते हैं, अगर नहीं होते तो मैं बोलता ही नहीं. Got it. अगेन यू डिडंट से क्वेश्चन नंबर बट इट्स फाइन. अभी आगे से आई Yeah. एम श्योर यू विल रिमेम्बर. ये Yes. आईएफआर दिल्ली टू चेन्नई एक्स्ट्रा था, फालतू का था. कभी भी कॉल खत्म हो रहे हैं फिर थोड़ी सी गैप आ रही है, फिर फालतू में कुछ दो चीज ऐड कर रहे हो, दो चीज ऐड कर रहे हो, उससे भी कॉल लेंदी हो रहा है. जरूरत नहीं है. अवेयरनेस, कम ऑन. You are still almost there, but you're not completely there when it comes to understanding what is happening in the examination. And that I can only say not to judge, but with your performance, nothing else. Once the both things match, you will see that you'll easily score 75, 80 any given day, no matter how good or bad the paper is. We already know you are expediting. We are waiting. We have given you flight level 2980 because we are just adjusting it for you because you have human organ transplant on board. नहीं तो मेरे को आगे 2980 नहीं दे सकता हूँ आपको मैं कल आगे, तो आगे आप 310 मिल जाएगा. यहाँ तक का इशू था इसलिए मैं आपको डिले नहीं दे रहा हूँ. इतना कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ, तो ये बोलने की क्या जरूरत है. अननेसेसरी है ये. समझ रहे हैं Yeah. आप. अननेसेसरी है. यहाँ पे आप, ठीक है, यहाँ पे रीडबैक बहुत अच्छा था. अप्रोचिंग टैक्सीवे इंटरसेक्शन विल होल्ड पोजिशन, विल होल्ड शॉर्ट ऑफ इंटरसेक्शन, Mm-hmm. विल रिपोर्ट रीचिंग. विल को बोला चल जाएगा. Yeah. ठीक है. स्ट्रक्चरिंग कम था बट अच्छा था, नॉट बैड. So what I'm trying to say is it was a good call. थोड़ा क्लीन नहीं था बट अच्छा था. स्टार्टअप भी अच्छा था बट लॉग थोड़े ऊपर नीचे हैं, बट स्टिल यू मैनेज टू स्कोर गुड. आप स्कोर तो ले रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे. फील आ जाएगी ना, हो गया पास, ऐसा समझना है Got it. आपको. Mhm. Yeah. या Yes, sir. क्योंकि कुछ एग्जामिनर्स फिर स्कोर शायद फील के बेसिस पे कम दे दें. और ये तो सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन है, लाइक व्हाट 13 हो गया यहाँ पे हमारा. इट वाज गुड, नॉट बैड. देन क्वेश्चन नंबर 2. So सी 15, फ्रेम. right? 1 13, 5, right? 13, 7 and 13. 8. Frame call in mind. Okay, sorry. 8 and 7, right? 15, correct. I can clearly see, think and call. Here there was a lot of dead air. What is this time? You're giving me time before departure? Yeah, time of departure was 0355. How can you give me 0350? Didn't make sense. You gave me radial, but you gave me DME inbound Kalna. Kalna is an MRP from where you are 25 nautical miles inbound. Your radial 1903 and your DME both will be from the same VOR, which is Delhi. Oh, So yes. your DME will be Mhm. outbound Delta Outbound. Papa November. How much? Maybe 110 DME, maybe 980 DME. I've thought that such a nice way without the Yes. use of a scale. Come on, use it, apply it, apply it, apply it. So many times I've told you radial DME from the same station. Yes, sir. These will Uh, get you more marks. Now yeah. here's situational awareness. Waypoints, you don't have DME waypoints. It's just nautical mile approx. What I liked was you made it a climb call. It was a climb call. So somewhere you're thinking in the right direction with the intent. I'm very proud of you. Okay. Estimates, I need MRPs mainly. I didn't see many MRPs. I saw HIA, Hyderabad VOR. One significant Yes. point Yes. before and after each control boundary that you see. It's all about waypoints. Waypoints are where you will give your mandatory position reports. That's why they're called mandatory reporting points. Next, it can be more refined. Request climb clearance. Come on. First, you say top of climb, you give time estimate of that, and then you say request climb. What is climb clearance? That is wrong. That is not RT. ये सब बहुत बोलने की जरूरत नहीं थी. आप बस बोल देते कि कालना मैं इतनी देर में पहुंचूंगा. टॉप ऑफ क्लाइंब भी मेरा वही टाइम पे होना है. रिक्वेस्ट क्लाइंब, क्योंकि कलना पे मुझे 310 मिल चुका है. बस थोड़ा बहुत और क्लैरिटी चाहिए. आई वॉन्ट यू टू थिंक अ लिटिल मोर. जस्ट थिंक. आई मीन जस्ट थिंक, गेट डीपर इनटू इट. जस्ट थिंक दैट ओके ये क्या है और मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पर. आई वॉज वेरी हैप्पी कि आपने क्लाइंब कॉल लिया, बट क्लाइंब कॉल स्ट्रक्चर्ड सही नहीं था. कैसे होता है ये? आप बोलोगे POC. टॉप ऑफ क्लाइंब, उसका टाइम दे दोगे 0545, एस्टिमेटिंग कालना 0545, रिक्वेस्ट क्लाइंब, दैट्स इट. और कुछ नहीं.
एयरबस 320 पैसेंजर ऑन बोर्ड, ये कॉल में नहीं बोल रहे हैं, फालतू चीजें हैं अभी। डेविएशन वेविएशन के टाइम एयरबस 320 बोल सकता हूँ, पैन पैन मेडे के टाइम बोल सकता हूँ, नए एटीसी को बोल सकता हूँ। समझ रहे हैं? ये तो दिल्ली भेज रहा है, दिल्ली को पता है एयरबस 320 है कोई एक मैंडेटरी चीज नहीं है कि एयरक्राफ्ट टाइप हर कॉल में बोलना है नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। पैसेंजर जो हर कॉल में बोलना है नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। क्लाइंब क्लियरेंस नहीं, रिक्वेस्ट क्लाइंब। ठीक है, समझ रहे हैं आपको ये सब? I got it. So see, you're almost there. You didn't use MRPs. You didn't use DME with your Delhi. Situational awareness missing है. You gave dead air. ठीक है। वे पॉइंट पे आपने डीएमई बोल दिया। एमआरपीस कम बोले हैं आपने। क्लाइम में टॉप ऑफ क्लाइम नहीं बोला, रिक्वेस्ट क्लाइम बोलना है, क्लियरेंस कुछ नहीं होता। ये Mhm. एक्स्ट्रा दे दिया। सिली मिस्टेक्स है और कुछ नहीं है। दैट्स इट। Still you get a 12 on this. I think this can be minimized. What do you think? What's up? I think these errors can be minimized. What do you Yeah, think? yeah, yeah. So like I just thought passengers on board and aircraft type should be mentioned. That's I shouldn't have mentioned that. You No. thought. Don't think, Baba. Follow the training. In the training, think about things that sir is asking you to think. Like, आप कुछ भी सोचो कि वो गलत है सही है, कौन बोलेगा आपको? मेरे सामने बोलोगे मैं बोल रहा हूँ, उस पर भी आप ध्यान नहीं दोगे तो आप वही चीजें सोचते रहोगे फिर। यू थॉट, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट? डू दे नॉट नो? ट्रांसपॉन्डर में सब देख रहे हैं वो लोग। पैन पैन अच्छा था बट स्ट्रक्चर्ड नहीं था। रिसीव बैड वेदर वार्निंग ओवर हैदराबाद। विल डेविएट ऑन नहीं। Deviating on it. डेविएटिंग ऑन ओन। फिर डेविएटिंग लेफ्ट नहीं, टर्निंग लेफ्ट फॉर 15 नॉटिकल माइल्स। फिर ठीक है, एट 10 नॉटिकल माइल विल स्काई 300 फीट। स्टे नहीं जाना चाहिए। विल फ्लाई, विल क्लाइम 300 फीट बोल सकते हो फॉर फ्लाइट लेवल 313। फ्लाई, विल फ्लाई पैरेलल ऑन डेविएटेड ट्रैक। ऑल एक्सरे लाइट्स ऑन, कीप अ लुकआउट, एयरबस 320। बस खत्म। Okay. पैसेंजर ऑन बोर्ड नहीं चाहिए बट रेडियल डीएमई एस्टिमेट्स थे तो बोल सकते थे, कम से कम रेडियल डीएमई तो बोल सकते थे आप। हैदराबाद पहले आ रहा है या उसके पीछे भोपाल था, जो भी व्यवहार है आपका, उसके बेसिस पे आप रेडियल डीएमई बोल सकते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yeah, I got it. Position is हाँ, बस position, position. थोड़ा बहुत स्ट्रक्चरिंग है। एंड ये चीज आपको सिखाई गई है, आप अगर इनको मास्टर कर लोगे तो ये एरर्स नहीं आएंगे। जो आपको सिखाया है ना, वो प्रोटोकॉल है, वो बेसिक प्रोटोकॉल है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ खुद से इन्वेंट करके दिया है जो नहीं चलता है। वो चलता है, दैट इज रिफाइंड। ओके, बाकी कोई बड़ा इश्यू नहीं था इसमें, बहुत अच्छा था कॉल। बट ये आपको लगेगा भी नहीं आपने कुछ गलत किया और एग्जामिनर बोलेगा यार इसको पूरा पेपर कर दिया बट आए 55 60 है, मन नहीं हो रहा भेजने का। सो वो डिलेमा में आ जाएगा वहां पे एग्जामिनर। उसको वो फील नहीं करानी है, हमें 60 पे क्या फील करानी है इसको भेजो। वो फील कराना है उनको वहां पे, इसलिए मैं बोलता हूँ फर्स्ट 3 4 क्वेश्चंस भी अच्छे चले गए, यूर थ्रू। ऐसा क्यों करेगा कोई एग्जामिनर जो उनको पता है एक्यूरेसी मिल रही है हमें? इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस टुडे। These little things I'm sure you'll improve by tomorrow morning, tomorrow evening when you give me another mock. Now I'm doing this for you. समझ रहे हो? 2 मॉक, 1 मॉक, 3 मॉक में हो जाता है। आई डोंट माइंड यू टेक 10 मॉक्स नीडेड। आई वांट टू सी परफेक्शन एज लॉन्ग एज वी कैन हैव द टाइम टू डू इट। आपके ऊपर आप कितने जल्दी लाते हो, यू हैव टू जस्ट वर्क ऑन द फीडबैक। यू आर नॉट स्टिल अवेयर। लैंग्वेज, नो डेड एयर, सिचुएशनल अवेयरनेस, इन सब की टेक्निक्स क्या है? फ्रेम योर कॉल इन माइंड बिफोर यू स्पीक, रिवाइज बाय द बुक, दैट्स इट। खुद का कुछ मत डालो। अच्छा था, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा था। ये सिली मिस्टेक्स मैं बोल रही थी यार, ये खलील अगर ये सिली मिस्टेक ना करे तो यू कैन इजीली स्कोर 90 ऑन द पेपर। इसलिए गुस्सा आ रहा था, बस समझ रहे हो? आज एग्जामिनर को गुस्सा आ रहा था, मेरे को तो जरा भी नहीं आ रहा है बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट। आई एम वेरी हैप्पी विद द परफॉर्मेंस। बट देन आई वांट यू टू improve a little bit because this will keep us somewhere on the borderline if you are under panic and the paper is not simple. समझ रहे हो? Yeah. और कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो योर ट्रबल्स, आई नो योर प्रॉब्लम्स। इफ यू कैन इम्प्रूव सो मच, आई नो इफ यू कीप ट्राइंग इवेंचुअली यू विल बी परफेक्ट। 3 ब्रावो। प्लीज क्वेश्चन नंबर स्पेसिफाई कर दो खुद के लिए भी उनके लिए भी। यही देखो डेड एयर कितना लंबा आया, ये तो इज नॉट हेल्दी यहाँ पे।
It's a big dead area. I'm counting every 2 5 seconds after 5 7 seconds. ठीक है, वो खराब लग रहा है, वो अच्छा नहीं लग रहा है, प्रोफेशनल नहीं लग रहा है। पायलट सोचने के बाद ही कॉल लेगा ना एटीसी को, डिसीजन मेकिंग के बाद ही बात करेगा ना पायलट। सोचा है कभी मैं क्या बोल रहा हूँ खलील? पायलट विल ऑलवेज टॉक टू एटीसी आफ्टर डिसीजन मेकिंग, राइट, और विद Right. रिक्वेस्ट। Mm-hmm. इसलिए तो मैं बोलता हूँ सोच के कॉल लो, दैट इज नथिंग, मेक योर डिसीजन फर्स्ट एंड देन टेक रिक्वेस्ट। अभी तो समझ जाओ ये बात को आप, अच्छा रहेगा ना। Yeah. मुझे अच्छा लगा आपका, बाकी आपने कुछ अच्छा ट्राई किया, एंड आई लाइक दैट योर इंटेंट्स आर राइट इन द प्लेस। रीजॉइनिंग क्लियरेंस बोलना है आपको, रिक्वेस्ट, डिसेंट एंड रीजॉइनिंग क्लियरेंस, बस इन द एंड ये मिसिंग था। ये Yeah. आईएफआर डेल्टा तो चेन्नई बोलने की जरूरत नहीं है, अनलेस इट डजंट चेंज, है ना, ये अननेसेसरी था, वो भी डेड एयर के बाद बोला आपने। वहां 1 मिनट वेस्ट हो गया आपका, मैं गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने वाला था कि आपने ये बोल दिया, तो इसके चक्कर में हमारे कुछ 15 20 30 सेकंड चले गए। एंड में रिक्वेस्ट बोलना है, बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन डालनी है पहले डालो। मेन इन्फॉर्मेशन नहीं डाली, रेडियल डीएमई, फ्लाइट लेवल, रूट एस्टिमेट्स, वो चाहिए तो आप डाल सकते हो एंड में बस। क्योंकि हवा में है तो मैंने आप लोग को क्या सिखाया है, हवा में इन एयर ऑल 5 पॉइंट्स आर नेसेसरी। उसमें पैसेंजर ऑन बोर्ड, एयरक्राफ्ट टाइप, फ्लाइट रूल्स नहीं आता है। समझ आई बात? उसमें Position फ्लाइट radial. लेवल, रूट, सुनो लिखो, फ्लाइट लेवल, रूट, एस्टिमेट्स, रेडियल, डीएमई। Focus on what is given to you, Khalil. Come on. We have time, we have space, we have the will, we have the energy, we have the resources, we have the instructions, we have everything we need. And we are doing it. You are doing amazing. Nowhere in one question I felt that आज कुछ गलत कर रहा है यार. The fact that I'm talking about refining your call means you are at the final level of your improvement and learning. And I'm so proud of you that you're Oops. finally doing what is requested to be done. You're there, almost there, almost there. I mean, problem would have happened if you would have not taken a mock to not know what else can be improved. So we will not let that happen. Neither you, neither me. Simple. Good thinking, pan pan. Bad that you didn't remember Niner, but good you said disregard and then said Niner. Disregard क्यों? Correction बोल के कर देते But वहां पे. I actually didn't say station calling in the first call. That's हम्म. why I disregarded. चलेगा, बट 9 पे ध्यान नहीं था, बट बाद में ध्यान आया अंडर प्रेशर ऑफ टाइम एंड लास्ट क्वेश्चन. Khalil, when I tell you worry about time, only then you worry about time. Can we make a deal on that? No, Have I so far told you to worry about time no. today? So don't worry about time. You still had 2 minutes 48 seconds left. So what are you worried about? In that also, I made you repeat question number 1 and 2 again. So what are you worried about time? अब ये टाइम क्या फायदा हमारा? ये टाइम थोड़ा डिसीजन मेकिंग में डालते या रिफाइनिंग में डालते तो शायद और इम्प्रूवमेंट आता ना. Don't worry about time, okay? Don't worry. Zero worries. You are there, almost there. I can see you taking crash courses for RT. I'm planning something interesting. I'll tell you. Simple. It'll be fun. समझ रहे हैं? You have it in you. You have to just show them the way they want to see it, the way ICA wants us to show it in our exams or in our learnings. Okay? So don't worry about time. Disregard भी ऐसे नहीं बोलना है. ठीक है, चेन्नई टावर डिसरिगार्ड बोल सकते थे, बट ठीक है, इस पर कुछ कट नहीं होना है इसमें. समझ नहीं आया कॉल अच्छे से. थिंक अबाउट एज पायलट, पैन 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 पैन, चेन्नई टावर, एयर इंडिया 9852, लैंडेड रनवे 09er. जब भी लैंड करते हैं टाइम बता देते हैं. ठीक है. एक्सपीरियंसिंग लाउड नॉइज बिलो केबिन. उसके बाद आप क्या बोले? 1 second. Why are you not looking happy? Are you not happy with the way I'm doing things for you? No, no, the last call, I didn't know what I thought I could No, it have was done good. You something. said pan pan. It was a pan pan call. You are there. You are in sync. I'm happy. If you are worried, sir, मेरे को 4 बजे बुला के 4:30 क्यों लिया? Come on, I'm simulating unpredictability of the sessions, exam days. Are you upset about that? No, no. I'm If just you had this call commit, would have if you gone had better. commitments at 5, you can tell me and go.
No, sir. I was available. This call could have gone better. That's all. All calls could have gone better. Come on. Yeah. See, you need to acknowledge. Yes, sir. When we are learning phase, we acknowledge. Exam day पे भी show super confidence है. मैं जो भी क्या सही क्या सर करो मेरे को पास. That day we can say whatever we want to say to our examiners, convince them है सर जान दो ना एक दो मार्क मत काटना मेरे जाते जाते बोल देने का. Sir, I'm sorry for that mistake. I hope you don't reduce my marks there. If they understand your will is in the right place, they'll say, "Yeah, he's right, yeah. Let's look at his strengths." And you might go through part two. You never know the the benefit of soft words. समझ रहे हो? समझ रहे हो? I'm telling you the key to a lot of things. Landed runway 0 time. Experience loud noise below cabin. Suspecting tire burst. पायलट को कॉकपिट में साफ दिख रहा है ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन. फिर आता है स्टॉपिंग एयरक्राफ्ट स्लोली. वहीं बस रिक्वेस्ट फायर फाइटिंग सर्विसेज एंड इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ऑन रनवे 09er. दैट्स इट. कुछ नहीं कर सकते और ऐसे टाइम पे हम लोग. ये तो Got it. सिंपल कॉल है. आपने भी वही बोला है बट आप थोड़ा सोच के नहीं बोले हो बस या पढ़ के या याद करके नहीं बोले हो. आप बोले हो थोड़ा डेड एयर के बाद 4 डॉट आगे डेड एयर है वहां पे होल्डिंग पोजीशन आफ्टर कमिंग टू स्टॉप. सॉरी. रिक्वेस्ट फॉर द इंस्ट्रक्शंस नॉट नीडेड. अच्छा था. थिंकिंग विंकिंग सब सही जगह पे है बस क्लैरिटी नहीं है और कुछ नहीं है. टाइम बोल देना है रनवे का. कमिंग टू स्टॉप होल्डिंग पोजीशन जब बोल रहे हो तो वापस मेंशन करना है रनवे 09er. जहां पे भी दोबारा जब जब पोजीशन का नाम हो रहा है तब तो वो पोजीशन कंफर्म होनी चाहिए. What happened? I don't know. It was good, but it was Didn't give not enough time fine. to think about breaks. Huh? Sorry? Didn't give enough time to think about what caused the loud sound. What caused the what? What Loud caused sound. the condition situation over here? I didn't think अभी too much. अभी we cannot go in past, but ये सब सिखाया है समझाया है क्लास Yeah. में. या तो आप सुन के भूल गए हो या आप नहीं सुने या डिस्ट्रैक्टेड थे. वॉट एवर इट इज वी डोंट केयर. अभी ध्यान रखो. जो हो गया सो हो गया. अभी अभी देखते हैं ना अपन क्या हो गया. यू डिडंट थिंक. थिंक. टाइम की टेंशन मत लो. मैं बोल रहा हूँ ना टाइम की टेंशन मत लो. इट्स एन इल्यूजन. ट्रस्ट मी इट्स एन इल्यूजन. अरे 15 मिनट के भी कॉन्वर्जेशंस नहीं होते टोटल 1 2 3 घंटे के फ्लाइट में. टोटल आप रिकॉर्ड करोगे तो आपको तो 25 मिनट में 3 4 फेजेस मिल रहे हैं बात करने के. सर इट्स मोर देन वी नीड एक्चुअली. जिसमें यार लिखते हैं इसलिए स्लो हो जाता है. कॉकपिट में लिखते नहीं है. ऐसा है बस. एनाटिकल इंफॉर्मेशन सर्विसेज. खलील यू आर ऑलमोस्ट देयर विथ योर एब्रिविएशंस. मेक इट सुपर परफेक्ट. पता नहीं उसने वहां 4 मार्क काट दिए तो सर्विस बोल दिया. सर्विसेज बोलना है अपन को. बहुत सारी चीजें आती है उसमें. वेरीफाई करना. हाँ अगर सर्विस ही लिखा है देन स्टिक विद इट. आई थिंक इट सर्विसेज. That was तो ये अच्छा है. बट भाग रहे हो भाग रहे हो भाग रहे हो. अरे क्यों भाग रहे हो. रुको ना. गो टू नेक्स्ट. रूल क्यों ब्रेक कर रहे हो एग्जाम. तो गुस्सा आ रहा था एग्जामिनर को. ये एक ही चीज कर रहा है. एक ही चीज कर रहा है गड़बड़. बट वहां तुम्हारे मार्क्स नहीं कटोगे. डोंट वरी. दैट वाज क्लीन फाइनली. आई एम वेरी हैप्पी. अपर कंट्रोल एरिया अच्छा बोले. सेंटर लाइन अच्छा बोले. आई वाज वेरी हैप्पी. So 2012 32 and then we have this rejoining clearance was good. Refined नहीं था बस. 38 and then this was also good, not refined, but I liked what you did there. अच्छा था. 45 and then यहाँ पे मैं कम ही दे रहा हूँ. ठीक है कुछ गड़बड़ नहीं था वैसे आपका. 57 and then we have what 15 ना. 72 I guess. That is amazing. Good job. Now what do you think about your errors? Tell me. um call structure. स्ट्रक्चर में इतना इश्यू नहीं है. गलत जा रहे हो. डेड एयर. Dead air. रिफाइनमेंट ऑफ कॉल्स. Mm-hmm. यूजिंग करेक्ट फ्रेजेस. बस. एंड थिंक बिफोर स्पीक. और पोजिशन रिपोर्ट एलिमेंट इन एयर कॉल एलिमेंट्स.
Yeah. So what do you think about your errors? In air call structure elements. What are those five elements needed in every call? Flight level, route, Flight level, estimates, estimates for mandatory reporting points. and One, points. waypoints. Okay. And yeah, Huh. And radial DME from a VOR. Come yeah, on. yes, Waypoint 9. yes, Hmm. yes, yes. VOR, sorry, radial DME from VOR. Hmm. Time also is important. And route and flight level. Hmm. And after that, estimates. And Estimates with respect to with respect waypoints. to points, yeah. Hmm. Mandatory reporting by points. Yeah, No dead air when you start a call. there because Better you make decision first and then just make a call. correct. Let's understand in this language. You know decision making is so important for you. You are established pilot. Come on. Yes, sir. Hmm. Um, don't give unnecessary information. Hmm. Route rejoining clearance keywords, climb Yeah. keywords, top of climb and climb call. Intent were all correct. Don't worry about it. Just refinement now. You're good with intent. मैं नेक्स्ट पेपर आपको बहुत डिफिकल्ट बना के दूंगा. लेट्स सी अब डिफिकल्ट पेपर कैसे हैंडल होता है. बस रिफाइन हो गया लैंग्वेज. इंटेंट तुम्हारे क्लिक हो ही रहे हैं. कोई कुछ नहीं कर पाएगा. ऑलरेडी स्कोर इतना अच्छा आ रहा है आपको. देखो स्ट्रेंथ देखो कितनी है आपके यहाँ पे. एंड टाइम की क्यों टेंशन ले रहे हो. 2.5 मिनट एक्स्ट्रा बचा है हमारे पास. Right, sir. सो टेल मी एनीथिंग एल्स. Not using for, only passing and descending. Using for descending or लेवल climbing. चेंज बोलते हो उसको. लेवल चेंज. Yes. Question numbers. नाइनर पे ध्यान दो. एक Minor. पुरानी वीकनेस है आज वापस रिपीट हुई एक बार. डोंट वरी अबाउट टाइम लिखो. ये टायर बस्ट का तो पढ़ लिया ना अभी. दोबारा रिपीट नहीं होने चाहिए. Yeah. ब्रेक शॉट इंडिकेशन के वजह से पैन पैन है तो दिमाग को याद तो आ रहा है. Yeah. Yeah. Whenever saying position, confirm the position again and again if you have to. Following? Brakes hot indication. See, I'll Um, tell you. ब्रेक्स हॉट इंडिकेशन कॉकपिट में एक इंडिकेटर होता है ब्रेक टेम्परेचर का. उसमें हमको दिख रहा है हॉट है. और हमें केबिन क्रू ने बोला भी है नीचे से आई है आवाज. नीचे से आवाज आई है और ब्रेक शॉट है तो हम अजम्पशन करें. चेकलिस्ट का एक पार्ट होता है जनरली कि मेरा ब्रेक्स हॉट है. वो पैन पैन सिचुएशन होती है बिकॉज ब्रेक्स हॉट है तो वो टायर बर्स्ट से टायर में नाइट्रोजन होता है. इट कैन कैच फायर एंड द फायर कैन स्प्रेड टू माई विंग्स. अभी बर्स्ट हुआ है तो मेरे को लग रहा है टायर बर्स्ट है बिकॉज कॉकपिट में भी आया है. हो सकता है कोई छोटा मोटा एफओडी का आवाज आया हो. तो मैं तो एयरक्राफ्ट स्टॉप कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को कंफर्मेशन है कि कॉकपिट में ब्रेक्स आउट इंडिकेशन आया. वी गो विद दिस अजम्पशन इन आवर स्क्रिप्ट्स फॉर सच कॉल्स. correct. समझ रहे हो. तो फायर फाइटिंग को स्टैंड बाय पे बुला लिया. इसका एक ही इलाज होता है कि नेचुरल कूलिंग होने दो. उसके बाद ही एयरक्राफ्ट को मूव करो. यू कैन नॉट. इट्स नॉट इवन सेफ टू इवैक्यूएट पैसेंजर्स अनलेस यू हैव इंस्ट्रक्शंस टू डिसअबार्क पैसेंजर्स फ्रॉम एटीसी. वो देख के बताएंगे क्या सेफ लग रहा है आपको. और एक ही जगह से होगा द फर्देस्ट अवे प्लेस. ऐसी सिचुएशंस होती हैं रियल लाइफ में. बहुत होती हैं. एक के बाद So एक सारे टायर फुटते रहते हैं एक साथ. stopping slowly, right? So या stopping ऐसे slowly. टाइम पे फायर एक्सटिंग्विशिंग डालोगे आप तो और फैलेगा वो. Mhm. हम्म, बहुत हादसे हुए हैं ऐसे. बट योर थिंकिंग वाज करेक्ट. पैन पैन एंड ऑल. ओके. Right, एंड so. मेंशन क्वेश्चन नंबर फॉर क्लैरिटी जस्ट नथिंग एल्स. अगर वो जो बोल रहे हैं उनकी बात मानो. Mm-hmm. Be in sync. The examiner is your everything in the exam. Be in sync. Don't be scared about something that you don't see. Understand you're the pilot. Let that thing reflect in your mind. Let you come up with conclusions. Stick to your scripts with respect to following some basic rules, following phraseology, everything properly. Speak aram se that you were speaking. You have scored great, but see, we so have so many corrections. Silly mistakes. रेडियल डीएम चलो ठीक है. टेक्निकल एरर है. डेड एयर चलो निकल जाएगा. रेडियल डीएम में भी आगे से मेरे को लगता नहीं आप गलत बोलोगे. रिक्वेस्ट क्लाइम, टॉप ऑफ क्लाइम, रिजॉइनिंग क्लियरेंस, सिंपल है सब. कुछ बड़ी बात नहीं है. सो आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू. यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ. गेट सम कॉन्फिडेंस थिंकिंग चलो व्हाट आई एम डूइंग इज द राइट थिंग नाउ. लेट्स कंटिन्यू. एंड आई थिंक इवेंचुअली आई एम गोइंग टू हैव दिस perfection with respect to minimizing my errors, nothing else.
I'm glad you remembered everything. You were aware about the situations and all. Good job. अच्छा था, बहुत अच्छा था. Thank you, शुरू sir. में feedbacks दे दिए. I want you to improve, and I think one more step of improvement and you're good to clear part one. Good as in all situations. Yes, sir. Any I'll do that. questions? No, negative. Chalo, I'll take your leave, and I want you to be available for next few days, even though whether I'm working or not, I will be working. It's exam season. Still, I'll make time and do a mock with you. So maybe tomorrow, day after, you just be ready mentally. If you have any commitments, you let me know. Yes, sir. Give me a list of the accuracy in abbreviations, the one I maintained. वो करना आज बस. बाकी Yeah. कुछ भी चाहिए मुझे बताना. Yes, sir. Okay? All right, sir. Thank you. Good job. Keep improving. We have time. Thank you, sir. Most welcome.